मुझे ऐसा लगता है यार हर स्पोर्ट में एक हुक आपको मिल ही जाता है। Sauber is one team जहाँ से जो चैंपियंस थे, it was known to be the champion producing team. The head of Mercedes, he was like shouting to that guy Michael, no, and that guy's like, Toto, it's racing. Give me your favorite controversy around this sport. Would be of course the 2021 decision that was taken by FIA. Hamilton was crying after 2021. Why do Indian drivers, why don't they make it? क्यों नहीं पहुंच पाते होता? I think the one main reason is sponsorship. Hey guys, welcome to another episode of the Everything Sports Podcast. Today we have a great episode for you. We have Rishabh Singh, our co-host as always, and we have another Rishabh on set, Rishabh Gupta. He's a big F1 fan for a few years now, and we'll be sitting down and discussing everything about Formula 1. Okay, so hope you guys enjoy. Go like, share and subscribe. Thank you. मुझे ऐसा लगता है यार हर स्पोर्ट में एक हुक आपको मिल ही जाता है। एक हुक मतलब कई स्पोर्ट्स में लुक्स होते हैं, इवन फुटबॉल में भी क्या है, इनिशियली जो लोग आते हैं वो इसलिए करते हैं कि वेरी गुड पर्सनालिटी और ये वगैरह वगैरह, एंड देन दे गेट टू नो अबाउट द गेम, रूल्स क्या है, स्टोरी क्या चल रही है। एंड आई थिंक फुटबॉल में ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि इट्स अ एंटायर वर्ल्ड इन इटसेल्फ। दैट इज आल्सो ट्रू, बट F1 के में यार देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। मतलब जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया भी था कि वो मिसकंसेप्शन बहुत है कि इट्स ऑल अबाउट रेसिंग, बट ऐसा नहीं है। मेरे वाला पॉइंट पर डिसएग्री कि looks the game is very there's a hook you mentioned. Yes. So because of that hook na, it's not just speed. Please understand. That's what you're talking about. Yeah. It's not just speed, but it's also tactical. It's also some science there. A lot of science. It's also some sort of trading that is involved. So I think it is one such sport which has amalgamation of a lot of business aspect, sporting aspect, personality aspect. Plus, it's the most dangerous sport. It is. But like, what do you mean by trading? Trading से मेरा ये मतलब है कि जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, they're on a contract. हर ड्राइवर का कॉन्ट्रैक्ट होता है. Like transfers. There are transfers. They even have agents. I'll tell you. Oscar Piastri's case, his agent was Jenson Button. Yes. Who was negotiating all his deals. Jenson Button for you, because you don't watch. He's a British driver. He's won the championship once, na? I think so. Yeah. He was Hamilton's teammate. Acha. Way back in McLaren. When he started, like 7-8. 7-8. He was one of the best in that era. He was then succeeded by. He also has a podcast now, by the way. उसका भी podcast है Jenson Button का. And he was succeeded by then young driver, as we all know him as Vettel. Sebastian Vettel was young that time. He joined Red Bull, and then you had that 4-5 year का 4-5 साल से 13 वाला Vettel वाला era था. Vettel won all the four championships. लाइन से जीता वो. And जो इंडियन जीपी में जो रेसेस थी, he won all the races. एक बहुत आइकॉनिक फोटो है उसकी, बाउ डाउन करते हुए कार को, वो बहुत इंटरनेशनल सर्किट की इंडिया की. अच्छा. वो इधर चैंपियनशिप जीता था तब वो, and he bowed down to the car कि like what a piece of machine. Like insane. It's very interesting यार. All of it is very interesting. कि like bro इतना टेक है इसमें कि like eras होती है literally. Like Mercedes की थी turbo hybrid के टाइम, like there was this new concept in the cars. अब जैसे ये टेक चेंज हो गई, कार्स चेंज हो गई हैं, फॉलो ज़्यादा कर सकते हो सब. Red Bull is dominating and no one is even close. Like difference दिखता है seconds का भाई. नहीं, but as a company Red Bull के मामले में यार मुझे ये भी देखना पड़ेगा. When I see a lot of sports, be it like dirt bike, something, winters वाला हो गया, Olympic, F1 है हमारे यहाँ पे, फुटबॉल है, Red Bull have like covered everything. कहीं ना कहीं एक Red Bull as a company is genius. Amazing यार. Genius. क्या marketing है यार. And उनके पास एक वो है bro, अगर if you've seen this soapbox racing. Yeah. Yes. Of course. It's so funny. Like भाई they have invented that sport यार. बेसिकली अब उसके मतलब वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, मतलब इट्स अ ईयरली थिंग नाउ. एंड दे उनका वो भी है कि लाइक यू हैव टू मेक समथिंग टू फ्लाई ऑफ, लाइक दे हैव सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. एंड
Red Bull का I think there's this glider championship also जहाँ पे that's the one, yeah. amazing है कि जितने आगे तक आप ऊपर रहोगे but पानी में they picked up on a niche. You see, this is the product comes in this. yeah ये तो अपन ने ध्यान ही नहीं दिया And what is the मतलब they making इसमें पैसा बना रहे हैं वो लोग. not a sponsor Not a sponsor. That's why I turned it back. we wish That's why I turned it back. But Time है. the things that they're associated with, soapbox racing हो गई, race F1 racing हो हर गई, चीज है और पता नहीं they're sponsoring all the adrenaline वाला stuff. bro Championships, this, races, mountain climbing and Yeah. whatnot. this is So one that's thing not I the noticed, very small thing. cricket में अभी they started sponsoring players. नोटिस करना सारे यंग प्लेयर्स के बैट्स पे ही होते रेड बुल के Yeah. जो भी अप एंड कमर्स होते लाइक संजू सैमसन जब 1-2 साल पहले ही हैड द लोगो केएल राहुल हैड द लोगो लाइक ऑल द न्यू पीपल अप एंड कमर्स हैड द लोगोस ब्रो सो लाइक उनका वो भी दिमाग देख कि लाइक दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्पॉन्सर द फ्यूचर स्टार्स दे आर नॉट ट्राइंग टू स्पॉन्सर कोहली या रोहित शर्मा या टॉप लेवल but being a soft drink company मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग इतना ज़्यादा जो एक स्पोर्ट्स को लेके उनका वो है कि इनिशियली इट वाज ऑलवेज लाइक एक एनर्जी ड्रिंक है नाउ दे आर एसोसिएटिंग स्पोर्ट्स एंड क्रेजीनेस विद इट और उसका आपको आज फर्क पड़ रहा है मतलब आई थिंक इंडिया में मतलब लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट कि आज से 4-5 साल पहले तक रेड बुल वाज लाइक कि ठीक है बहुत इट वाज वेरी लग्जरी प्रोडक्ट अभी हर जगह मिल रहा है इट्स एवरीवेयर bro but see I feel even Prime is going on the same footsteps marketing wise Yeah. marketing wise I'm not saying anything because unka price point is double It's very- so yeah. wo is that is different but marketing wise even there like But they sign big clubs they sign UFC they sign बट like big रेड बुल का F1 में क्या लेना देना मतलब कैसा चल रहा है अभी कब वो लोग एंटर कब किए इसमें इनिशियली थे या अभी इनको आई थिंक एक decade no में- oh so I have this fun fact Yeah, please. So Stake F1 team अभी launch हुई like launch नहीं हुई it's just took over Alfa Romeo and so Sauber Sauber has been this बहुत पुरानी टीम बहुत टाइम से and that was the team that introduced Red Bull into F1 in which year I don't know the year 6 or 7. That's what I remember. हाँ but उनके उस पे पहला मार्केटिंग लोगो था Red Bull का अच्छा and that is how Red Bull came into F1 हम्म and that team is now dead because Stake ने take over कर लिया But it's called Sauber Steak. It's Or it's just only called Steak. Stake. Oh, Sauber is done now. done now. Yeah, which is थोड़ा sad क्योंकि बहुत टाइम से थी. टाइम से भी थी and in fact Sauber is one team जहाँ से जो champions थे it was known to be the champion producing team. Like stepping stone. उसके निकले हुए लोग stepping आगे Yes, जाके चैंपियंस yes, बन yes, सकते yes. हैं उनका BMW के साथ था. Yeah. क्या क्या प्लेयर्स निकले वहाँ से I think Leclerc. Kubica, was one, Robert Kubica. Or there are a few good names. Yeah. Schumacher if I remember. The initial Sauber Benetton में start किया था ना? Benetton में था, sorry. Benetton में start किया था. But But Sauber was important like overall बहुत भाई तो देखना BMW को लाए थे. Leclerc अभी Audi को ला रहे हैं. अब तो 25 में. हाँ अब तो चेंज हो गई टीम बट स्टिल दे वर द इनिशियल वो की लाइक Audi आए एंड देन Alfa Romeo लाइक बिग कंपनीज मैन लाइक बहुत हुआ है लाइक पर हाँ one coming back to the F1, what do you think is the watershed moment? Like in our generation, all of us are like in our 20s. So when did you guys actually connect? F1 से F1 से. I started watching F1 जब I think 2014 around I started watching. What do you? Hamilton was destroying everyone तब. Yes, yes. And like बहुत natural instinct था like as a new fan की like अबे यार इसको हराओ कोई यार यही जीतता है हर बार यार. So तब I think जब ऐसे स्टेज पे होता है ना कोई स्पोर्ट की like एक ही टीम जीत रही है या एक ही वो हो रहा है
तो बहुत मुश्किल होता है न्यू फैंस का घुसना, क्योंकि इट्स लाइक कि लाइक बोरिंग है यार, एक ही जीत रहा है बार बार, इट्स नॉट कॉम्पिटिटिव। आप फैंस मतलब जो भी उस टाइम पे डोमिनेट कर भी रहे होता है ना, उसके भी ज्यादा फैंस उसी टाइम बन रहे होते हैं, बिकॉज लाइक ग्रो अप वाचिंग समवन की यार जीत रहा है, अगले 5-6 इयर्स में लाइक आपका कहीं ना कहीं आ जाता है कि हाँ यार मैं जब देखना चालू किया था ही वाज द विनर। सो पर हैमिल्टन का for other reasons also he was iconic because he was like the first black driver to reach that level. What about you? I went into F1 जब Drive to Survive came out. For me, I mean, that was the watershed moment. The reason I'll tell you why was after watching that series, वो जो sport था ना, वो सिर्फ speed के बारे में नहीं था. Glorify हो गया था. I got to know कि what is actually happening behind the scenes. ऐसा नहीं कि आप बस कार ले ली and you just drive on the track. How do you drive on the track? What is the quality of your car? What are the specifications? What is happening with the bosses behind the scenes? Pit stop, although it's a 3-second pit stop on an average. वो 3 second is a कितना बड़ा टाइम है, मतलब कितना किसी ड्राइवर के लिए कोई 3.5-4 सेकंड का स्टॉप कितना डेवास्टेटिंग हो सकता है। I have a question. F1 की इनिशियली जब चालू हुआ था, इनिशियल फेजेस में जब F1 आया था, 1950s, वो पिट स्टॉप टाइम कितना होता था तब और अभी कितना है? इज इट द सेम और हमने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं? इट यूज्ड टू बी मिनट्स पहले रियली मिनट्स इनिशियली, बिकॉज़ तब कार्स कैसी थी, लाइक इट वाज लिटरली रोड टाइप की कार्स। ओके, तो बहुत वो था यार, टायर्स भी वैसे होते थे। सो बेसिकली हर सेक्टर में उन्होंने डेवलपमेंट मतलब उस टाइम के हिसाब से एडवांस थी, बिकॉज़ वी टॉकिंग 50s एंड 60s। बट लेट्स नॉट लाइक गो दैट बैक, लेट्स टॉक अबाउट 2000s also, मतलब they were in seconds, but they were not like 2.5-3 seconds. आज तो गेम माइक्रो सेकंड्स का। ब्रो अब आई थिंक द फास्टेस्ट पिट स्टॉप इज 1.78 सेकंड। बट डिपेंड करता है ना, पिट स्टॉप में आप कुछ पर्टिकुलर चीजें भी बदल सकते हो और आप बहुत सारी चीजें भी बदल सकते हो। नहीं, यू कांट चेंज सो मच भाई, इवेंचुअली तो तेरे को टायर बदलना है ना। लाइक और क्या और भी तो चीजें हो सकती है। पहले होता था फ्यूल। एक बार आग लग गई थी, लिटरली हुआ है। एक गाड़ी पिट में आई, आई थिंक इट वाज राइकनन या कोई ऐसे ही था, आई डोंट रिमेंबर हु इट वाज, बट आई रिमेंबर वो पाइप रह गया था और वो जा रहा था और वो पाइप लटका हुआ रह गया एंड आग लग गई थी। बिकॉज इट्स डेंजरस कि लाइक भाई तुम फ्यूल ऐसे अभी क्या है, इट्स हाइब्रिड एरा में इट्स फ्यूल प्लस बैटरी पावर। अच्छा, तो जिस फेज की हम बात कर रहे हैं 7-8 वाले फेज में या 10 वाले फेज में, उस टाइम दे हैड टू लाइक फिजिकली फ्यूल द व्हीकल। तो उसमें ऑफ कोर्स रिस्क टाइम भी लगता था, रिस्क भी इन्वॉल्व था, बट इट्स अ गेम ऑफ नॉट इवन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स। अगर तूने वो देखी रश, like we were talking about last time, तो उसमें that was I think 80s 70s ऐसा कुछ था, तब भी हाँ फ्यूलिंग था, ये सब था, and तब pit stops were very long, like minutes तो नहीं, पर हाँ 5 to 10 seconds was okay, like it was understood इतना होगा। and आजकल like again the fastest 1.78 या ऐसा कुछ है, तो imagine कितना गिरा है। बट F1 में अभी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चल रही है क्या? कोई इंडिया मालिया था तो I think Malia is what he is today, but Malia was one of the most prominent figures in terms of bringing F1 going to India, going to F1 in fact, ठीक है, जहाँ पे actually businessman from India is standing and is naming the car Force India, which I think has बहुत proud होता भाई, potential, it showed potential as to भाई यहाँ के entrepreneurs भी business persons हैं, interested is eventful sport में। because एक और चीज, बहुत मुश्किल है F1 में घुसना, क्योंकि it's so expensive, plus it's not so profitable, like as people think कि like पैसा ही पैसा है, तो as a owner you don't really make a lot of profits, it's usually जो कमाया लग गया नेक्स्ट सीजन के लिए या आने वाले सीजन्स के लिए, like बहुत rarely वो, it's basically like a marketing tool। बट माल्या का जहाँ मुझे मालूम है, he was also like F1 driver, कहीं ना कहीं वो इस स्पोर्ट में घुसना भी चाह रहा था। He wasn't a F1 driver। नहीं, but he was into the sport,
he like me or sir. But he was into racing, go-karting and all these Yes. things. He was really into that. See, हाँ. this sport also become a point of prestige, na? All the people who are associated जो इस sport से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो It's like you look up to them, man, कि boss, this person is the owner of this team. It's like a rich club. कि like very big, few people big are. boys club. At the same time यार, at the same time ऋषभ जिस टाइम पे उसने किया था ये लाइक जो जब F1 के स्पोर्ट को जाके किया, आई थिंक दैट वाज द टाइम जहाँ पे कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि एक इंडियन कंपनी बाहर में जाके इतने बड़े स्पोर्ट को टेक ओवर कर रही है. दैट वाज आवर एक्सपोजर उस वर्ल्ड लेवल पे कि हाँ यार दिस इंडियन गाय जो कि F1 में घुसना चाह रहा है. आई थिंक F1 उस टाइम पे कई लोगों ने सुना ही इस वजह से था जस्ट बिकॉज हेडलाइंस हर जगह थी कि मालिया लाइक यू नो इन्वेस्टेड इन दिस. ये बिकॉज ऑफ ड्राइव टू सर्वाइव ना, एक तो जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट के लोग हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियंस, ठीक है, ये जुड़ पाए स्पोर्ट्स. आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू. F1 की टेलीकास्ट वाज नॉट एक्सेसिबल पहले, ठीक है. इट वाज दैट यूरोपियन सेटिंग क्लब. इवन आई टेल यू, यूएस में F1 has been this active because of Drive to Survive in the last 4-5 years. US में इतना नहीं था. very like they tried so many times कि US में रेस करे, और वो लास वेगस के होटल में भी किया था. वो बहुत घटिया रेसेस थे. And eventually only एक रेस was like stuck, which was Austin. बस जो होती है हर साल. And now they're expanding because of the show. तो अब लास वेगस हुआ है, अब मायामी हुआ है, अब ये सब हो रहा है. पर again like US में घुसना is very मुश्किल. But like once you're there, sports के लिए it's great. What do you guys think about this sport entering India? Like, what's our future? Like, अगर हम country के अंदर की बात करें तो, what do you think? See, the known name right now is Jihan Darwala. He was in F2. F2 he was with the Red Bull associate team. Now he's at Formula E Maserati. Jihan Darwala is the active driver that we have right now. It started from Narayan Karthikeya. I mean, I remember those जो ads आते थे. If you remember Tata के Tata के ads थे, Tata नहीं थे, टायर के थे. JK टायर के थे. So he was the poster boy for F1 in India. He drove for Lotus. Wasn't very successful. Lotus ये था ना जिसने उसको बोला था राइकनन को. हाँ. Oh, so this is a very funny story. So Lotus F1 team थी, बहुत cool कार थी उनकी, black and gold. So like it was like a very cool thing to look at. तो उनने क्या किया, किमी राइकनन को उनने वो दिया, जो बहुत फेमस ड्राइवर है, जीत चुका है चैंपियनशिप एक बार आई थिंक. उनको उसको साइन किया और उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डाला कि एवरी पॉइंट यू स्कोर विल गिव यू व्हाट $50,000 या कुछ ऐसा वो था. Every point he scored, they'll give him $50,000. They went bankrupt. What? Because he scored too many points. Bro, 350 points or something. Into कर. मैं लिख के दे रहा हूँ किसी ना किसी इंटर्न की जॉब तो जरूर गई जिसने. नहीं, this was like a full boss to boss वाला decision. भाई $50,000 every point into 350 points. They were in a debt of millions. but he didn't claim that money. He kept it. Whereas the Lotus team would have gone bankrupt without this time. At the same time, Rishabh, like if you know, remember this or not, एक airlines, मुझे इसी चीज से याद आया, एक airlines ने एक चीज निकाली थी, उनका कुछ black card था, उसमें ऐसा था, you get a lifetime, yeah exactly, lifetime pass. Yeah, please, you know that case, right? बताओ जरा एक बार. क्या case? American Airlines brought out this pass for this amount. I think it was $1 million or maybe $100,000. Yeah, I don't know the figure. You buy that pass and you can fly first class. अच्छा कभी anywhere cancel किसी का ticket and you get priority. मतलब it's your airline now. अरे हाँ ये मैं सुन चुका हूँ. Yes. And dude, you know what? 15 to 20 people applied for that card. They eventually got it, but it became such a chaos for the airline कि they had to like legit वो कोर्ट में गए, उन्होंने बोला कि सर हमने एक स्कीम निकाली थी, इट्स अ वेरी डिजास्टरस स्कीम और हमें रोल बैक करवानी है अब. Because you know what, Chirag, people were doing 7:30. There was this millionaire who used to wake up. He will fly to Italy, do his breakfast, then he will fly to somewhere else,
do his shopping वगैरह वगैरह, and by हाँ, 6 or 7 obviously, he's like- back at his place. Bro, like this is like it's too good of a scheme to be true. Yeah, but exactly, I But mean- हो गई तो like obviously फायदा उठाएंगे लोग. बहुत ज्यादा भाई, मुझे नहीं तेरे पास हो रही तो तू नहीं चाहता अभी. 110%, but हमारा पॉडकास्ट अभी अमेरिका में हो रहा होता. क्या कैमरा लेके जाना है बस. that is also true. But I mean, in fact, Mark Cuban also had this pass. हाँ, हाँ, yeah. I saw his वही मैं बोलूँ कहीं तो याद आ रहा है मेरे को यार ये. हाँ, I saw this. Mark Cuban had this. Yes. So he was discussing how they used to make use of it. अभी recently he was talking about Yeah, this. I so think Logan Paul की do they still podcast have में this? किसी का- Yes, हाँ, I do. ऐसा ही Do कुछ they था. still have this thing? नहीं, not anymore. Obviously नहीं भाई पागल. But like Mark Cuban ने तो काफी recently he said ना कि I'm doing all of this. What He they said he had it. what they did, I think, is कि they did not withdraw the pass like the people who had it, but they then stopped the scheme and stopped giving that pass to everyone. But So like एक बहुत limited हाँ. वो है. But at the same time चिराग उन लोगों ने काफी लोगों से buy out करने की भी कोशिश करी थी है. अच्छा. हाँ, but जो लोग resistant रहे और जिनको मालूम था कि it's such a good deal, भाई they cannot back off. क्यों दोगे तुम ये वापस? Like if you bought this, भाई तुम literally कभी भी कहीं भी जा सकते हो. And like तुम लोगों की कैंसिल करवा सकते हो टिकट. Like तुमको प्रायोरिटी मिलेगी. Like क्यों नहीं? तो पूरे घर वालों के लिए ले लो. सही है. I wish. But this sport has brought globalization. Globalization तो इसमें मतलब एक another level. It's a good example of how telecasting, how sponsoring, how branding पर has gone global. अभी क्या लगता है? Because I feel like अब now they're going back to that like बुरा वाला scheme, especially in terms of अपने South East Asian and Asian countries. क्योंकि okay अभी तक क्या हो रहा था? हॉटस्टार पे आता था, स्टार स्पोर्ट्स पे आता था. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर सोनी पे भी आया होगा कभी तो आई डोंट नो, बट हाँ लाइक ब्रॉडकास्ट अवेलेबल था फ्री में लोगों के लिए. हॉटस्टार है तो और बेटर है कि तुम अगर उस पर कोई इंडिया का मैच आ रहा है तो यू कैन स्टिल वॉच F1 हॉटस्टार पे. नाउ व्हाट दे हैव डन इज कि दे हैव गॉन बैक टू दैट F1 के ऐप पे देखो. या F1 TV कहीं ना कहीं restriction आ which is जाता है. expensive. It's So, like, but is approximately it like 300 to 400 आपको rupees per premium- month. Premium लेना पड़ेगा उसका और is it free? लेना पड़ता है. I bought it. हाँ, even I had it. I recently What's cancelled the it. price? 2400, 2500 था. साल का ना. साल. हाँ. Which is It's a big 3 deal. to 400 per month या ऐसा कुछ. So it is expensive. But see, only the fans na who are too much into the sport. हाँ. Only they will take it up because they know कि भाई हमारे पास कोई एवेन्यू नहीं देखने. हाँ. But Rishabh, do you feel like F1 cares about the Indian audience? They should care. They should. Yeah. Of course they should. We are 1.3 billion. No, But do they? But do they? No, they don't. They don't see as a feasible market for No, them. they do see, but not क्या है, yet. The government is not. The government has to also play a part na, to invite them. The reason why the Budh International Circuit race, Indian GP, as they called it, it got off the charts is because the government did not cooperate. The major issue is taxation. Every time it's taxation. So जो Indian GP थी, उसमें the government wanted to tax it as an entertainment. The state government, because Noida is in UP, Yes. so the UP government wanted to tax it as entertainment. इंटरटेनमेंट पे जब आप टैक्स करोगे तो टैक्स ज़्यादा है. यू नॉट ट्रीटिंग इट एज अ स्पोर्ट. ठीक है. दूसरा इशू ये हुआ था जो कार्स आती हैं इनकी, देयर वाज अ लॉट ऑफ इशू विद कस्टम ट्रांसपोर्ट लाइक लॉजिस्टिकल इश्यूज. लॉजिस्टिकल ठीक है. ड्यूटी अच्छा ड्यूटी भी यू लगी. पे ड्यूटी इफ यू आर डूइंग इट. सो द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दैट. आई मीन यू आर इन्वाइटिंग अ मेजर स्पोर्ट व्हिच विल मेक यू मनी. ठीक है. व्हिच विल मेक यू अ लॉट ऑफ मनी. Especially now. Especially like now. अभी popularity अब तो I feel like again this F1 TV thing has diminished it थोड़ा. हाँ, I it has, feel it like has. last year अगर करते हैं 2021 जो like historic season था ending की वजह से, उसके बाद अगर इंडिया में आ जाता ना next year, it would have made so much money. क्रेजी हो जाता ब्रो. Like Yeah. सब जाते मैं तो हैं. definitely Literally गया. सब जाते. क्रेजी हो जाता हूँ मतलब. Like भाई तू फैन नहीं है, तेरे को भी कोई ना कोई खींच के ले जाता है कि भाई तू देख, because देखने लायक स्पोर्ट है ये. Like everyone who I've like met who has been to the circuit is like उधर जाके भले तुमको पूरा वो नहीं दिखेगा, एक स्टैंड पे रहोगे, पर
जो वॉल्यूम है, जो नॉइज है, जो एड्रेनलिन है भाई, लाइक लगता है कि लाइक वाओ कुछ हो रहा है भाई ऐसा. You were almost there, right? So eventually some days ago we were talking about it. So I got hold of the Singapore GP tickets. I had the tickets. You had the tickets? मतलब I just because I booked it at the end ना, एकदम end में था. तो tickets are not available. Singapore GP is a popular GP. It's a night race. Night races are amazing. But for some reason I couldn't go. But coming back to what Chirag was saying. कितने की थी tickets approx? It was approximately like to tell people. It was 3 days का around ₹1 lakh per person. You had the full pass. Full pass, 3 days. Lakh rupees. Around ₹1 lakh. And this includes F2 races and everything. Everything. Because वो full package होगा. Yes, full package था. वो turn 2 की tickets थी. Turn 1 या turn 2. Which are the best seats. Turn 2 and 10. Turn 3 are the best seats. Because वहीं पे all the action happens on that time. Cars would slow down. They'll try to overtake each other. Maybe someday. But क्या यार? नहीं, because I remember Singapore जब I went. Amazing race. I didn't see the race क्योंकि I was not there during the race. But you go to the Ferris wheel na, the Singapore Ferris wheel. So the track is like right there. The Ferris wheel is like kind of on the track basically. So you can see it there and like entry भी जब होती है ना वो building में Ferris wheel के लिए. So right में you can see the barricades, the walls कि उस side track है. You can hear cars of course test driving और वो सब इतना सही दिखता है यार. like fun. एक तो city का track है ना यार. It's a night race. ठीक है. The track is amazing. ठीक है. The turns and everything they're too good. Yeah. Any F1 fan who goes for a live race, I mean I shouldn't say this but they would like some action in terms of cars touching each other or crashing or a yellow flag or something like that. तो वो जाके लगता है यार you know ये fun था ये चीज़. I'm not saying कि वो रोमन ग्रोजो वाला इंसिडेंट हो जाए but for example I'll tell you जो 2021 की अबू धाबी वाली रेस थी क्या चला ना अबू धाबी का ट्रैक is a very plain track. ठीक है. plain as in the one who leads the race is supposed to win the race. Overtaking नहीं है उसमें. See that person is supposed to win the race. पर ऐसे ट्रैक पता है क्या होता है? It's solely based on driver का skill. Because you have to find overtaking spots. क्योंकि होता ही नहीं है उसमें. इसमें तो it was a fact ना कि जो previous record था anyone who wins the quali will lead the race and that person will comfortably win the race. 2021 का जो finale था ठीक है. I mean that was the moment for F1 for any F1 because it peaked. I remember that because I was traveling that day. I was sitting in the Delhi airport lounge. I went crazy. हम तो भाई गाड़ी में बैठ के देख रहे थे. दिमाग खराब हो गया मेरा कि और मेरे पास में मर्सिडीज फैन था और हम रेड बुल फैंस थे बाकी दोनों और हम क्या चिल्लाए कि हाँ यस जीता वर्स्टैपेन भाई. लाइक वो लास्ट लैप वाज लाइक that was the last lap. Lewis was leading the race. And then Latifi on 50 laps. Latifi crashed. Latifi crashed in the end. And there was some confusion from the F1 where what they did was they were supposed to. I was telling you na that one guy is in charge to put complaints through. So he didn't put that through when he was like making his own rules. That race was supposed to be completed under the yellow flag. As far as I know. But for some reason he wanted to have he made Lewis and Max close to each other. Lewis had the old tires on, Max had the new tires on. Max pitted. Max pitted. ठीक है. And वो जो last lap की race थी, Lewis Hamilton lost that race. Max won that race. Lewis Hamilton would have become the 8th time world champion. Record 8. He would have broken Michael Schumacher's record. But Max went on to. But miscommunication हो गई कुछ. confusion हो गया. Toto Wolff कर दी क्या कर दी. Toto Wolff, the head of Mercedes, he was like shouting to that guy Michael, no, and that guy's like. Toto, it's racing. It's called racing. Toto से मुझे अभी ये याद आया कि अभी उसके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगे हुए हैं, राइट? अभी उसके ऊपर नहीं, I think नहीं, FIA drops investigation into Toto, Susie Wolff over alleged conflicts of interest. Susie Wolff is the MD of F1 all women series, F1 series. No, I think this was because she was heading the
हाँ, she's the MD. Youth वाला वो. Women वाला जो segment है F1 का, she is the MD of that. हाँ, so they thought there was some sort of क्या बोलते हैं overlap or conflict of interest to be precise. But what is interesting in that controversy is after the statement that was issued by FIA, every team, all 10 of them, they issued a statement saying that we never complained. Because F1 ने अपने स्टेटमेंट में कहा था FIA ने कि we received some complaint from the teams. All teams said कि no one complained. अच्छा. And then they had to. It was embarrassing for FIA because every team refuted the fact that they made any sort of complaint, including Red Bull. Then they had to drop the investigation. But the Wolves are taking some sort of legal action against FIA because हाँ, उनका नाम तो खराब हो रहा है. इसमें ऋषभ like F1 के स्पोर्ट में what's by the way it's so awkward अब मिल रहा है ऐसे. Yeah, I know. Rishabh is calling Rishabh. But like my question is कि what is the part of doping in this sport? नहीं है. So like there's no नशे या कुछ भी extra तो कुछ कर भी नहीं. But at the same time there are drugs. Like when we say drugs doesn't mean कि यार hallucination or ये सारी चीज़. Exactly. Focus हुआ, reaction time हो गया. So like ठीक है. एक चीज़ बोलूँ. हाँ. Not to like put a team down. Like किसी का ऐसे में को नहीं बोलना है. But let's say Williams जो it's a bottom of the table वाला टीम, उसका ड्राइवर फोकस के लिए कुछ ले भी लेगा तो भी भाई कोई कुछ बोलेगा नहीं. बट ये चीज है क्या स्पोर्ट में है ये चीज? No, I don't think so. नहीं जहाँ तक मेरी नॉलेज में इतने साल से कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आई नहीं है. कुछ भी नहीं है. ये इस स्पोर्ट में एक्चुअली का रिएक्शन टाइम है ना. So एक तो दिस स्पोर्ट इज गवर्न्ड बाय G's. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना जो ड्राइवर पे पड़ता है because the car is going at an abnormal speed. वो जो टर्न्स होते हैं 400 kilometers is the max. Trivia fact, imagine every driver loses a weight of 4 to 5 kgs after every race. But Rishabh, Singapore but like if it is so much about physical well-being और ये सारी चीजें तो क्या डोपिंग इसमें आपको enhance नहीं करती है? आप ज़्यादा फिट रहते हो, you have more muscle, you have more power, so ये physical sport भी तो है. देख first thing muscle is not the goal, but power, because every gram या every kg, I don't remember the exact but you lose 10th of a second the weight you put on. So you can't put on weight, you have like तुम्हारा जो कार का वेट और तुम्हारा वेट होता है ना, that is the total weight जो वो लेके चलती कंपनी भी कि इतना होना चाहिए. So you can't like increase your weight first thing. Second thing भाई तू focus चल बढ़ा भी ले, तू तेरा reaction time बढ़ा भी ले, but this is not only about driver का skill, it's about the car also. It's about the track, it's about the strategy, it's about 100 of things. So in short इसमें like doping करना point नहीं है. But I'm very sure WADA involved होगा इसमें because it's an international sport, world entry. हाँ मेरे को भी feel होगा, but I don't think no driver would risk or no company would risk their careers. Do you really believe that there are not these type of people who would do anything to get to that level or जो next level पे जाने के लिए कुछ भी करेंगे? Doping has always been a very central part of any sport. It has been, but I haven't heard even a rumor. As to doping. Like सही में it's not even कि start भी नहीं हुई conversation कभी इस चीज के बारे में. It's like that. You have heard it here first. हाँ. नहीं, but there have been other things. Yeah. Crashgate था famously. There was this Ferrari का वो. Give me your favorite controversy around this sport. My favorite controversy would be of course the 2021 decision that was taken by FIA as to how many cars should lead, how many cars should be allowed to be overtaken. Like वो basic last lap का. Then second I would put the 2008 वाला season, the Crashgate वाला season. Crashgate for me is one क्योंकि what happened? That was new. What happened? कि someone's teammate is crashing on purpose so that this guy can get more points and like go ahead या कुछ like उनका एक वो होता है ना हर रेस में कि like because it's based on कि जैसे IPL में होता है ना कभी जैसे क्वालिफिकेशन सिनेरियो कि लाइक वो टीम इतने से हारी तो हम नेट रन रेट से पहुंचेंगे तो ऐसा. This sport is, now that you brought it up, like for the viewers, this sport is not just
an individual sport. Please understand, it's a team sport also. Yeah. So at times, like Crashgate that we discuss now, at times the teams need to decide कि कौन first रहे, कौन second रहे. See, this is what we were talking about last time. अगर आप third हो तो fourth वाले को कैसे आपको आगे नहीं आने देना? Because क्योंकि हो सकता है fourth वाले के पास new tires है तो that fourth वाला person may be able to overtake the race leader who's in my team. कैसे उसको slow down करना है? It's a very tactical and a very team-led sport. Because at the end of it, individual championship के अलावा there's also the constructors championship. वो ज़्यादा important होती है वैसे. But because constructors championship के basis पे you get the money. The position that you finish on, the whatever the prize money that there is, they do it on the basis of constructors championship. Unless आप Ferrari हो क्योंकि आपको एक specified amount guaranteed है. Ferrari has a contract. Heritage bonus sort of thing. यहाँ पे because वो team First is a heritage team, तो उनका percentage कुछ fixed है कि उन्हें percentage नहीं, they have this amount. They have this amount, fixed amount. Like भले तुम कोई भी position पे आओ वो तो तुमको मिलेगा ही, plus ये X amount जो तुम्हारा fixed है, guaranteed heritage bonus वो तुमको मिलेगा. But Crashgate, please. Crashgate के बारे में हमारे viewers को बताइए. हाँ, so this was Crashgate. I think Fernando Alonso था teammate जो जिसको advantage हुआ उससे. Team was Renault, yeah. Who was the guy who crashed? The guy who crashed was Nelson Piquet. Yeah. So this was Singapore. Na? Yeah. So basically what happened was Fernando Alonso को advantage मिलता if he would have finished in a certain position. Yes. For him to finish in that certain position, एक red flag या yellow flag कुछ होना उस point पे ज़रूरी हो गया था. ठीक है? तो जैसे ही वो होता उसको फ्री पिट स्टॉप मिल जाता, लाइक टाइम वो नहीं होता क्योंकि फिर और वो आगे पहुंच जाता फ्रेश टायर्स के साथ, प्लस एक बंदा कम भी हो जाता तो नेचुरली एक पोजीशन तो ऊपर हो ही जाता वो. सो नेल्सन पीके को ऑर्डर्स मिले थे allegedly कि क्रैश. But ये तो open to all रहता है, right? ये सारी communications कोई भी सुन सकता है और record भी होती है. They must have had some. पहले नहीं, उस टाइम नहीं होता था. उस टाइम नहीं होता. अच्छा, okay. उस टाइम इतना ओपन नहीं था. Okay. अब everything is open. But at the same time they must have some code ना, some code language also कि हाँ. होगा वो plan B, plan C बहुत होते हैं उनके, plan Z तक होते हैं उनके. So like you never know कि क्या है. You always assume as a fan कि हाँ अगर Ferrari चार्ज लग को बोल रही है कि let's go with plan B, तो you have to assume कि क्या होने वाला है plan B. They won't tell of course everyone कि so they told him to crash. हाँ. So he crashed. This was the entire thing कि like you can't forcibly like make your teammate crash and कुछ ऐसा. This is like so against the sport. तो वो हुआ था. And then Fernando Alonso again allegedly was unaware of all of this. So he came out clean. उसको कुछ नहीं हुआ, एक चीज नहीं हुई, ना वो कोई केस में घुसा ना कुछ. एक कोई हियरिंग है उसके लग गया होगा obviously, पर उसका कुछ भी वो नहीं था involved. Now why this topic has become relevant in 23? Right. That is the question that you should ask. The reason why this conversation has become relevant is because Felipe Massa, who lost the championship that year, has served a legal notice to Lewis Hamilton, who won the 2008 championship. Even FIA of course. To strip Hamilton of the title, the 2008 championship, and give it to Felipe Massa. Why? Because Singapore में जो हुआ था, it changed the scenario, the standing because of those points. So he is saying in his prayer that he filed कि you strip the whole race, the whole Singapore race. तो जब वो Singapore race के points हटेंगे, automatically Felipe Massa would become the champion. Because 2008 का जो Brazilian GP थी, Massa won that race. Massa का last year था. Last year था. And he's Brazilian and Ferrari was with Ferrari. Brazilian and Ferrari. And Brazil में F1 is big. Like इधर का cricket है. तो like है काफी massive है उधर. Because Massa के पहले भी और drivers रहे हैं तो that matters. Massa finished first, and if Lewis Hamilton would have finished fifth or higher, ठीक है, Lewis Hamilton would have won. अगर नहीं करता तो Massa would have won. Yes. Hamilton finished fifth, exact fifth, and you should see the video. He's crying. मतलब the whole Ferrari section, they were first excited कि we won the championship.
But as soon as Hamilton finished 5th, it was a wave of tears, भाई. इतना the sport can be, dramatic, na? Yeah. And full of emotions. तो वो emotions दिख रहे थे उस segment में. So he served the notice this year. They fighting the case. Let's see what happens. Again, like even जो अपन ये बात करें emotional होने की, Hamilton was crying after 2021 because it was such a thing कि like he was preparing कि हाँ मैं record तोड़ूंगा, like I'll be the GOAT, like undisputed he would have been the GOAT. He is. I mean, for me he is. No doubt about that. Again, now greatest of all time. Yes, yeah, of course. But this is again now I can say I can argue with him about this. He has not broken the record. See, if he would have broken, it would have been कि like अब Messi is the GOAT because he won the World Cup. तो वो बात हो जाती कि Ronaldo fans would have been like हाँ चल है like अब क्या बोले ठीक है करता वो ठीक है but he's still in that category of Schumacher. He's in the top 3 definitely for everyone. No matter if you're a fan of him or not, he is in the top 3 for everyone. But again, my point, that one thing to be above everyone else was that not thin completed. But but still, I mean, for me, he is. F1 के future के हिसाब से, who do you think is the upcoming एक तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये person में hope है कि in the next 4-5 years he could be the next big thing in this sport. Okay. And why? In my opinion, I don't think you can like pick anyone. No, but at the same time, who are you excited about? कि यार I'm really excited. That is about a different question, bro. But like I don't, मेरे को नहीं लगता कि तुम एक ड्राइवर को देख के बोल सकते हो कि हाँ he'll be the next Hamilton or Schumacher because again not Hamilton or like I'm saying the next big thing, next big मतलब एक sport का face होता है, right? It changes after 5 years, 6 years. He's saying कि whom do you look forward to? Yeah, exactly. Who would you like to see? So for me, Piastri. For me, Piastri. Who's he? Piastri is an Australian driver. McLaren के लिए. And what Piastri did this year, we'll discuss this of course. That has to be discussed in this podcast. Debut year था उसका. Debut year था और कैसे debut हुआ that has to be told to the viewers. He came second, I think, कितनी बार? 3-4 times. No, but tell me, क्या है? Piastri for me, Lando Norris for me. I'm hoping McLaren does better. Yeah, 24. McLaren should do better. I'm very excited for 24 for McLaren. क्योंकि इस साल glimpse था कि like हाँ they can like hang with the top teams. Go papaya. तो McLaren I'm hoping. Piastri why everyone was talking about Piastri this year is that for this season Piastri was actually Alpine's reserve driver. Alpine issued a statement saying that next season onward Piastri is going to be a lead driver. Immediately within 24 hours Piastri puts up a statement saying that this has been said by this team and I'm denying. This is not true. This is not true. This is false. I will not be racing for F1 next year. And उनके official page ने tweet किया. Piastri tweeted and Twitter went mad. Everyone went crazy. पागल हो गए लोग कि like a rookie driver is challenging his team which trained him, and then he ultimately went to McLaren. They had a tribunal case also जिसमें एक दिन के बाद ही हो गया था. Immediately हो गया था. Alpine had filed the case and it was then decided कि कुछ close settlement हुआ as far as I remember, but नहीं पर उनका कुछ ऐसा स्टैंडिंग था नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था एंड उसका. So basically उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो रिसाइन कर रहा है, हमारे लिए करेगा. By the same time, Rishabh, when you are a rookie driver, एक इतनी बड़ी कंपनी जो कि आपको आपका लीड ड्राइवर बनाना चाहती है, openly, not behind closed doors, openly you are saying कि नहीं. देखो Alpine का जो major concern था is that we invested in this driver. Yes. He raced for us, ठीक है, but we trained him also, we paid for him. So उनका कंसर्न ये था कि ये तो हमारा बच्चा है, तो करेगा, इसको पाला पोसा है, तो ये किसी और की फैमिली में कैसे जा सकता है? बेटा बोला हट. But I think it was a very smart move. Yeah. The trading part I'm telling you about now, इतना smartly negotiated contract था. McLaren would have told him, I'm very sure, because Jenson Button was negotiating on behalf of Piastri.
McLaren would have definitely told him, you come to our team, ठीक है, all the legal hassle will be dealt by us. And they did, yeah. Alpine could not do anything, and he's thank God he did. Because क्या season था, like second he's finishing. Yeah. So he was beating Lando Norris in some of the races. Yes. And what's the average age of rookies in F1? 1920. 1920. And what's the peak age average? Peak. Alonso is in 40s. Alonso is 42. Hamilton is 38, 39. So basically 30 के बाद ही like you can get on इसमें जब तक तुम्हारे रिएक्शन टाइम है तब तक तुम हो. नहीं, उसके अलावा भी I tell you, there are some drivers who have only raced for one season. ठीक है, one season के 6 महीने में करियर खत्म हो गया उनका. And there are some drivers who have been racing for 16-17 years now. देखिए आपकी एक तो of course the way you win, ठीक है, और आप कैसे खुद को कैसी टीम से एसोसिएटेड हो. For example, Alex Albon, ठीक है, he is one of my favorite drivers. If he gets a good team ना, I think he can make a dent. I think he was way too early into Red Bull. ठीक है, Red Bull थर्ड भी आ रहा था बंदा, second third आ रहा था, but he was crashing a lot. Famously, his most famous moment came जब वो Red Bull के लिए रेस कर रहा था, and वो I think lead कर रहा था, and Hamilton के like Hamilton was second and वो crash हो गया, थोड़े से कुछ contacts हैं जो भी था, and Hamilton took the lead, and this was like in the like this happened quite a few times. last third of the race, like अच्छा उस पे stage पे था, because he replaced Gasly. ठीक है, he replaced Gasly. He also because Gasly also उसके पहले Danny किया था ना कि भी यार जो ठीक है, नहीं रिकार्डो था उसके पहले, फुल टाइम तो रिकार्डो उसके पहले था, रियाज के पहले था ना. हाँ, तो रिकार्डो के बाद ही तो ये लोग आए. हाँ, ये रिकार्डो जो आया. हाँ, तो रेड बुल पता नहीं पेशेंस का इशू है, मे बी आई डोंट नो, कि यार द थिंग इज Gasly crashed. He was not performing well, so he was sent back to the junior team. This was like 2-3 races के बाद ही like mid season change कर दिया. Albon आया, they thought कि भाई he is also crashing, उसको भी 3, 4, 5, 6 races में replace कर दिया. And फिर Perez का legendary performance था. Rise of Perez. तो Alex Albon, I personally feel if he's because this year in Williams he did good. He did good. The kind of car that they had. But I feel like यार वो top उधर आके he can't win. He can't win. Like I feel like he can be in the top 5 comfortably, but I don't think he can win because yeah, it is a very different thing to win a F1 race. Like कितना insane वो है यार feat कि like तुम जीत रहे हो. Like एक तो there are only 20 drivers in the entire world जो कर रहे हैं ये sport, and उसमें से तुम एक हो जो एक race जीत रहे हो, और वो लिस्ट और छोटी है race winners की. It's very tough in this sport. Very tough. So basically the number of participants जितने हैं उस रेस में, मतलब there will be so many people who will never make it there, right? There are only 20 seats. Yeah. In every season. And look at the number of drivers that are there. What is the number? Thousands. Must be. You start from the go-karting level. Every but also from that go-karting till F2, then till F1. And this is only the like कैसे क्या बोलूँ यार, लाइक नॉर्मल जो ट्रैक है वो ऐसा होता है कि गो कार्टिंग F3, F2, F1, इतने अलग वेरिएशंस है रेसिंग के जिससे आते हैं ड्राइवर्स. ले मॉन्स है, ले मॉन्स इज फेमसली द 24 आवर वाला रेस जिसमें 2-3 ड्राइवर की टीम होती है और वो 24 आवर्स रेस करते हैं. दैट इज इनसेन, दैट इज लेजेंडरी. उसमें से लोग आते हैं, F1 जिनसे नहीं हो पाता है वो उधर जाते हैं. लाइक बहुत वो है इंडीकार 500 जो मैं तेरे को बता रहा था इसके पहले. हाँ, यूएस का इंडीकार 500 का भी होता है. नैस्कार तो चल थोड़ा अलग हो गया, बट हाँ बहुत सारे अलग अलग रेसिंग के वो है. BMW की एक होती थी चैंपियनशिप, F का ही कुछ उनके ही अफिलिएशन में था, उनका होता था. एक जर्मन का अलग होता है, जर्मनी का. लाइक बहुत अलग चीज़ है इन सब में. लाइक कहीं से भी आ सकते हो तुम. इंडिया में भी द प्लेस व्हिच इज गिविंग अस ड्राइवर्स इज नॉट नोएडा. नोएडा तो लेट मी गेस, हरियाणा, मद्रास, साउथ मद्रास. गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. It's called the Madras Racing Club. It's in Chennai, of course. But that is the only track that they have for training and everything. जो
F2 और F3 के जो ड्राइवर्स हैं. Yes, but Rishabh, I think जो F1 का स्पोर्ट है वो अगर इंडिया में आता है तो it will be very different, right? Because of the temperature and all that. It's just not at that level. Like अभी look, okay, racing is in India. ये मद्रास रेसिंग क्लब है. This is giving out drivers. ठीक है. इंडिया में रेसेस हो चुकी हैं ये सारी. अभी फार्मूला ई हुआ नहीं अगेन क्योंकि गवर्नमेंट और ये सब इशू आ गए, पर हो सकता था. फार्मूला ई इज सो कूल. आई एम सो डिसअपॉइंटेड. इट इज सो कूल कैंसिल्ड बिकॉज उसका आधा ट्रैक होता है, आधा स्ट्रीट सर्किट होता है. लाइक इट्स अ वेरी कूल थिंग और फुली इलेक्ट्रिक, तो इट्स वेरी फन टू वॉच. एंड देन अभी रिसेंटली मोटो जीपी हुआ विच इज द बाइक रेसिंग वाला थिंग. सो ऐसा नहीं कि नहीं है रेसिंग, आई थिंक आ रहा है, पर अगेन गवर्नमेंट के साइड से एज यू सेड थोड़ा वो होना पड़ेगा लीवे, तभी जाके स्पोर्ट आएगा. दूसरी चीज ये है कि द क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क इसकी व्हाई डू इंडियन ड्राइवर्स व्हाई डोंट दे मेक इट, क्यों नहीं पहुंच पाते टॉप तक. आई थिंक द वन मेन रीजन इज स्पॉन्सरशिप. Sponsorship is a big deal. It's a very expensive sport. It's a very expensive sport. Perez, for example, is a Mexican driver. And he's huge in Mexico. He's a star. He's a star. He moved to Europe when he was 11 or 12. The company which funded him was Telco. It's a massive telecom giant in Mexico. So Perez is a baby of Telco, who has been funding and sponsoring him since he was. अभी तक Red Bull का sponsor. तो you can see इसका logo है Telco का. वैसे 3 वो. और जो अगेन ये जो ट्रेडिंग वाला एस्पेक्ट है ना, क्यों इतना इंटाइसिंग होगा पेरेस टू कम टू रेड बुल. ही इज अ गुड ड्राइवर ऑफ कोर्स, मनी, बट बिकॉज टेल्को विल गिव मनी टू रेड बुल. इंडिया में आई थिंक टाटा इज डूइंग इट इन फार्मूला ई. महिंद्रा इज डूइंग इट. महिंद्रा एज अ टीम. But we need someone big like Ambani or someone to get in this sport and pick exactly. up Ambani or Adani को भाई घुसाओ इसमें भाई. The reason Ambani is because they are into that sporting arena. In football they have transformed. You guys know better. Yeah, football तो Ambani है. उसमें मतलब मैं जा सकता हूँ. I can go into that. But football they have transformed. IPL of course. Cricket तो. They've picked up a few more other sports. उनकी sponsorship कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए. सब everything is there. Yeah, camps. We need someone like a giant like an Ambani, a Reliance, or Adani, or कोई भी हो, to like put some gas into this sport in India. But why this particular sport? Basically जो मालिया ने किया वो अब होना चाहिए, पर without the. नहीं, but my point is कि just because we are like too much in numbers, right? मुझे ऐसा लगता है किसी भी स्पोर्ट के लिए इंडिया अगर एक मार्केट ओपन हो जाता है तो it is very profitable for that market and for that sport. तो इंडिया अगर जितना इंडिया अभी फुटबॉल में घुस रहा है ना, उतना अगर अभी F1 में घुसेगा ना, ग्रिड पे 10 ड्राइवर इंडियन हो सकते हैं. Yes, of course. 20 में से. Like क्योंकि टैलेंट इज नेवर द वो की इशू. हाँ, it needs a proper structure, proper training, proper journey. हमारे यहाँ जो एसोसिएशन है इंडिया में, जो ड्राइविंग एसोसिएशन है, they are only those bunch of, I mean, मुझे ऐसा लगता है कि it has to push ना यार, आपको push करना पड़ेगा. You have to go scouting for people who are interested. You tell me one thing, in Madhya Pradesh if you see, क्या है वो, have you do you even know of any go-karting track? There actually is a track. There is, but drifting के लिए यूज कर. अब उसमें पता है क्या है? नहीं, again, पीतमपुर one वो different है. अब now you have to bring your own tires and everything. So again, it becomes harder that to get car testing वाला चीज. वो तो वहाँ पे तो इंडियन की कार टेस्टिंग है. अरे but like you get into racing through anything. But I'm giving only an example of MP. Even Nadan, उसमें भी आप जो बड़े-बड़े states हैं नहीं वहाँ पे. There's only one in Tamil Nadu as far as I remember. Official. हाँ, official. And अब हैदराबाद में हुआ होगा. हैदराबाद में हो गया. But you see again. But हैदराबाद वाला is makeshift. Like again, Formula E को जरूरत ही नहीं है इतना कोई proper track की. तो it's थोड़ा ऐसा सा. But अगर I personally feel अगर Formula E होता ना, again political it became political. The government changed in Telangana, as we know, very recently. So what I read from the newspapers is that they had some disagreement and the government did not give them a
green flag. So they'll file an arbitral claim against the government of Telangana, the Formula E organizers. Were they promised this much investment? They were promised certain clearances, cooperation. इन्वेस्टमेंट नहीं डालेगी गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट देखो इन्वेस्टमेंट लाइक रास्ता खाली करके दे. नहीं इसमें था एक्चुअली. आई टेल यू इन्वेस्टमेंट क्यों? इन्वेस्टमेंट इन द सेंस दे वर funding Formula race also in some. So they were paying them to come here. Something. Okay, ठीक है. No, because this is again a very unrelated example. But this is WWE है. Again, it's not a sport entertainment. But like recently Perth की government ने उनको पैसा दिया कि तुम इधर event करो. So like वैसी चीज होगी, right? It was KCR's government's some parent project, as far as I know, and it would have been a good project. Formula to come to Indian people from all over the country to go and visit a place. Yeah. It makes the money, it makes the people in that city the money. You आप taxi करते हो, hotel करते हो, you spend some money. So tourism wise, money wise, it's good. But unfortunately, it didn't happen. And this also speaks a volume, na? कि if an organizer is promised something and just 1 month before the race you cancel the race. हाँ यार, that's a bad impression. It's a bad impression. स्पेशली यार आपको ना पता है नेक्स्ट टाइम जब कुछ लोग इस मार्केट में घुसने की सोच रहे होंगे दे विल टेक दिस एज एन एग्जांपल एंड दे विल बी कि यार नहीं यार यहाँ पे ये चीज नहीं हो पाती है. But I feel like stability. But I feel like the bigger the sport gets, the more chance it has to come here. क्योंकि of course. Look, like honestly अपनी गवर्नमेंट जो बड़ी चीजें होती है उसके लिए पहले हाथ मारती है कि हाँ ये तो चाहिए अपने को अपने देश में, which is good, बहुत अच्छी बात है. बट आई थिंक F1 का है टाइम, लाइक अभी आ जाना चाहिए. इसके बाद थोड़ा आई थिंक डिमिनिश होगा. आई एम फीलिंग कि लाइक फेज होता है यार सबका. बट एट द सेम टाइम लाइक इवन ड्राइव टू सर्वाइव नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स बिकम लाइक हाँ अब वो मत लाइक अगेन फर्स्ट सेकंड सीजन वर लाइक अमेजिंग एंड देन एक ड्रॉप ऑफ आया. तो लाइक वो है कि जब तक वो है तुम कैपिटलाइज करो, लेके आओ एंड फिर इससे और कैपिटलाइज करो. फिर ड्राइव टू सर्वाइव वो हो जाएगा, स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा तुम्हारा. but MotoGP was I was happy that it and it was a successfully went through. Yeah. So maybe you never know, maybe in the next 2-3 years we might have Indian GP back on. Let's see. Yes. होए भाई यार, मजा आएगा. पर इधर कितने की टिकट थी लास्ट टाइम, कुछ आइडिया है? यार उस टाइम सबसे महंगी थी स्टूडेंट्स. I think it was 20-30,000 तो थी, full like half package. 20-30,000 थी. Then there is the hassle of going from Delhi till वो ट्रैक भी दूर है. था. Traffic of course. But I think again कोई भी रेस में जाना is a hassle for fans. Worldwide, even Europe, even UAE countries या Arab countries, everyone. सब जगह हैसल हो गया है. ट्रैक पे जाना, उधर मैनेजमेंट, उधर फैंस कैसे होते हैं. लाइक वो फेमस फरारी का रेड स्मोक और ये सब, उससे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में कि लाइक भाई लोग सांस ही नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो धुआं उनके मुंह पे आ रहा था ऐसे पूरा. तो लाइक वो चीज़ें हैं, पर लाइक it's still a crazy experience. I feel like this sport is about experience. If you थोड़ा एक leisurely भी है, थोड़ा expensive sport भी है. ठीक है, for example, for someone to go to a Monaco GP. I actually want to know your thoughts about Monaco. Do you think कि अभी होना चाहिए Monaco GP? After the 23 वाला race. 23 में it never rains. So Monaco is a. And it rained in that race. Yeah. And it changed the dynamics. Yeah. It completely changed the dynamics. पूरी planning change हो गई. कैसे? आप soft tires से wet tires पे आ गए, intermediates पे आ गए. It becomes एक तो एक historical significance भी Monaco का. वो ही है यार, वो ही है. Like Monaco itself as a city is small, ठीक है? और वो city का ही layout use करते हैं. Like literally the city main road is the track. Now the thing is वो city का construction पूरा नहीं बदल सकते हैं road को बड़ा करने के लिए. Road उतने ही है इतने टाइम से, पर cars बड़ी हो गई हैं. तो अब overtaking is like very rare. अभी बारिश हुई इसलिए थोड़ा बहुत interesting हुआ. And again this is a one-off, you can't depend on this. Monaco in my opinion historically great track. अब it does not deserve to be on the calendar anymore.
क्योंकि वो वैसी रेस दे ही नहीं सकता है तुमको भाई हर साल, लाइक इम्पॉसिबल है वो होना. लाइक नो ऑफेंस टू द ट्रैक, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक एंड लाइक इट्स द मोस्ट फेमस, लाइक उसके वजह से बहुत लोगों को पता चलता है. कोई भी मूवी के प्रमोशंस होते थे ना F1 के साथ, लाइक सुपरमैन का था, एक वो डायमंड वाला था, लाइक बहुत चीजें थी, सब मोनाको की रेस पे ही होते थे. एंड सब वो यॉट्स पे बैठ के देख रहे हैं, यॉट लगा के घर से देख रहे हैं, लाइक इनसेन मैन. बट ठीक है, दैट इज फॉर द FI टू डिसाइड. एक यॉट टिकट यार ऋषभ करा लेते हैं यार. यॉट ही खरीद ले. यॉट टिकट, लेट्स इट्स स्टेपिंग स्टोन्स. ये अमेरिकन एयरलाइंस यॉट्स में नहीं आ रही. इधर भी एक स्कीम निकाल ले. But my favorite track would be the Singapore track यार, जहाँ तक मुझे लगा. Favorite Singapore? The track, the race, the results. One thing you would change about F1 if अगर ऐसा कोई ओपिनियन है तो क्या है पर्सनली आई बिलीव कि ये मैं एक चीज चेंज होना देखना चाहता हूँ, क्या इसकी जरूरत है? More inclusive, because F1 has been dominated by Europeans. अच्छा, okay. ठीक है, so it has to, you have to have drivers from everywhere. You have to have a race in Africa. Why is Africa missing from Africa is a very big market. Why is Africa missing from your Cape Town GP? Something of that sort. And this has been a demand. I'm not the first one to put it up, but even Hamilton and others have put this up. Why they've come close to it also, beach. Why no race in Africa? So it has to be inclusive. I think F1 needs to be more inclusive. मेरे हिसाब से तो भाई थोड़ा rules पे they need working. Like because it's such a like technical sport and like there's so many things going on. आप कभी वो नहीं कर पाओगे इसमें कि like ये fixed set of rules है. हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कभी ना कभी कि उनको लाइक अब क्या हुआ. एंड वो मेरे को लगता है डिफिकल्ट होता है फैंस के लिए कि भाई तुम रेस के बाद बता रहे हो कि हाँ इसके पॉइंट्स काट दिए हमने, ये डिमोट हो गया या वो हो गया. अब भाई फैंस रेस देखेंगे, अब तो भाई और अटेंशन स्पैन कम है तो भाई लाइक हाँ but like that's a really good point. इस टाइम पे जहाँ पे फुटबॉल 90 मिनट्स या फिर 120 मिनट्स में खत्म हो जाता है, now you see different sports है. F1 जो कि इतना ज़्यादा लंबा चलता है, do you really think कि ये वाला पॉइंट भी F1 2 hours, but at the same time like we also have 24-hour race. वो that's not F1 ना, that is a different thing. But like उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है क्या कि इससे भी कुछ फर्क पड़ता है, मतलब for like 2 hours 3 hours लोग उतना टेक्निकल तरीके से नहीं देख पाते हैं, especially those people who have just started watching it. I think देख again if you started watching it थोड़ा struggle है, but it's a struggle that is fruitful. आपको मजा आएगा जैसे ही तू like it's like जितना तुम जानोगे, we were talking about this before, जितना तुम जानोगे ना वो स्पोर्ट उतना तुम घुसते जाओगे उसमें. जितना तुमको पता होगा ना कि हाँ ये कौन सा फ्यूल बना रहे हैं, ये क्या है इसकी गाड़ी में, क्या वो है, कहाँ है नट और बोल्ट कम या क्या है, उतना तुम घुसते जाओगे उस चीज़ में कि यार ये ऐसा कर सकते, ये टैक्टिक ऐसा यूज़ कर सकते और ये सब कर सकते, लेकिन तुम और इमर्स होते जाओगे उस चीज़ में. So what is the next big thing coming from like F1 अभी क्या आने वाला है सबसे क्लोज में? The next big thing in 2025 is the 11th team. Which is Andretti, हाँ. अच्छा. American team. Fully American. Found the 11th team, which is Andretti. And वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है उसने कहा. He's already in IndyCar and NASCAR और वो सब. But there has been an opposition from the drivers because to have an 11th team means 2 more drivers on the track. अच्छा मतलब और space. So 22 लोग. Which makes a total of 22 cars on the track. हाँ. So the drivers feel is going to be hassle, but of course money is involved. पर क्या लगता है होना चाहिए? Like in your opinion? हाँ यार, why not? I mean, it's their problem. मैं सही बोलूँ अब F1 is about expansion, तो it should happen. US की अगर टीम आ गई, insane support होगा US के साइड से. और एक ये देख जितना भी अपन बोले लास वेगस, मायामी, ऑस्टिन, पर वो रेसेस एक लेवल तक ही तुमको पेनिट्रेट करवाएगी. तुम्हारा खुद की कंट्री की अगर टीम आ गई, ड्राइवर्स आ गए, तो देन यू विल बी लाइक हाँ अब भाई देखना पड़ेगा, अब लाइक ये जीते तो लाइक कुछ हो. And especially if they win, or maybe top 5 भी यार, it's not bad for usually American drivers don't win, पर ठीक है. It's been disappointing. See, has reacting. It's an American team, all American team. Yeah.
they've been extremely poor. I mean, even financially. it's good. Yeah. Financially, and it's good to see them in the top 10 if they even score 1 point. So they don't have the funding. I remember this line from Right to Survive कि जितने लोग हैश टीम में हैं at one particular time, उतने लोग मर्सिडीज टीम में छुट्टी पे रहते हैं एक particular time. मर्सिडीज has a staff of 1,000 people approximately, कम ज़्यादा हो सकता है. ऐसे like 100-150 लोगों की पूरी टीम है यार. अगर हैश में कोई 20-30 लोग छुट्टी पे है मतलब कितने ऑफिस बंद करना पड़ेगा. So you have that money also, you have to pump in money. बहुत एक सिंगल क्रैश जब होती है कार, कितने का खर्चा आता है? मिलियंस का. एक सिंगल क्रैश में कितना एक्सपेंसिव स्पोर्ट. तो ओके, लेट्स थोड़ा अब उस पे आ जाते फेवरेट्स पे. Yes. ओके, सो favorite driver all time has to be, I like Alonso. I was rooting for him this year. Everyone is rooting for Alonso. I मैंने Alonso का कब सुना था? When I used to live in Spain, like बहुत पहले, like बचपन में. I was in like 3rd class, 4th class या कुछ. तब मैंने सुना था Fernando Alonso नाम. And तब I think उसमें था Ferrari. Renault में था. वो येलो और ब्लू किसकी थी? रेनॉल्ड थी ना. हाँ, लाइक आई थिंक ही स्टार्टेड या ही वाज न्यू तब. आई थिंक शूमैकर के अगेंस्ट उसका थोड़ा था अच्छा राइवलरी. एंड देन जब मैंने देखना स्टार्ट किया वापस से, तब ही हैड रिटायर्ड बीच में. आई लाइक अंडरडॉग्स विनिंग हियर, पता है. तो आई विल से Fernando is not an underdog. Yeah. So I put in 2 names. One is Alonso and the second one is Perez. Perez for me, the 2020 Bahrain GP was from 20th position to the first position. वो बहुत insane था. So you know the story कि racing point में था वो. He was on position I think 5 or 6 starting में, and then he crashed या कुछ थोड़ा सा. Not crash like stop हुआ कहीं gravel में या कुछ. He got back on track. He was on 20. He went to the pit, changed tires, everything, strategy change हो गई, सब हो गया. Comes out, starts racing. और Racing Point is a team that उस time पे finished 4th या 5th या like mid of the table, not like top. This guy, भाई. And one more fact, they were about to axe. They had axed. इसका contract was over. They had already signed a replacement driver. So Perez had no contract. This was second last race season की. And Perez के पास contract नहीं था. And so like कोई motivation नहीं था उसके पास कि मैं भाई better करूँ इस टीम के लिए. भाई but वो जो 20 से 1 पे आया, भाई it was insane. और with like 2-3 laps to go, he came on 1 and he was leading end के 2-3 laps and he won the race. And भाई क्या insane moment था यार. That was his career defining moment. Yeah, and then that drive to survive moment. Drive to survive, what they do is dramatize. ठीक है, phone ring हो रहा है, Perez picks it up, ठीक है. And phone ring हो रहा है. And Christian Horner, Red Bull का वो lead principal. Perez, welcome to Red Bull. Oh my! Everyone went crazy. मतलब underdog winning is. Everyone likes. Yeah, of course, definitely. Yeah. It was such a good moment. Like everyone was happy. Feel like it was more of a like Leicester वाला thing. Exactly. Feel good वाला. And but you need that kind of moments in this sport. Any sport, you need that underdog story. Who's that driver from Alpine right now? One is Gasly, the other one is Esteban Ocon. One is उसकी Deadpool की helmet थी क्योंकि अभी Ryan Reynolds took over ना. So अभी recently in the last race, I think last week the second last race, उसने एक हेलमेट कस्टमाइज करे. अब इसमें तुम हेलमेट ही कस्टम करा सकते हो, तो भाई बहुत लिमिटेशन है. They have customized helmet for every race. अपने हिसाब से. So he got the full Deadpool print. भाई full mask वाला print on that, and he was like gift to Ryan Reynolds. But I'll wear it in the race and then I'll give it to him. Ki like all historical. So the reason I mentioned Ocon because Ocon won the Hungarian GP. The first one that he won, वो जिसमें crash हो गया था सबका.
he was sixth or seventh. But उसके बाद he led the race and he maintained his position, like position 1, and that was his first race. इसका manager Toto Wolff है वैसे. किसका? Ocon का. Like उसके under आता है वो Mercedes के. अच्छा. So Ocon की वाली बहुत Ocon is also one of the best drivers with wet tires or intermediate tires. I personally wet races में he has proven this. And he's won both his races from wet tires. But हाँ यार, underdog stories are like insane. Like Gasly, Italian वो GP जीता रहे यार, क्या था bro, this guy who races for Red Bull का junior team, like in the same F1 thing. Red Bull है और एक Alpha Tauri है जो उनका बच्चों को डालते हैं. तो Gasly जो Red Bull में था चांस जो उसको निकाल दिया, Alpha Tauri गया वो. And he actually won the race. Like he in 2021 ही था ना ये भी. He won Imola GP. He won in Italy. Yes. Like it was insane क्योंकि Alpha Tauri is technically Italian team. तो इटली में जीतना it was legendary bro उस time पे. Crazy underdog stories. Yeah, like we should do a separate video of the underdog stories. Okay. So favorite race ever. Favorite race ever has to be Bahrain GP 2020. Paris. मेरे लिए तो भाई I think yeah man 2021 final like it was so historic like उसको टॉप नहीं कर सकती कोई रेस like इतना crazy था यार. Okay, favorite rivalry. I know your answer. For me, really Max and Lewis 2021 season. Rosberg and Hamilton. हाँ वो भी. Bro like बचपन के दोस्त अब दुश्मन भाई इतना ड्रामेटिक है यार. तो सही है. And they did not like each other मतलब. But I also like Alonso versus Hamilton. Alonso Hamilton भी अच्छा. It was a small rivalry, but Alonso is like अब he's completely different भाई. Like अब he's a nice guy. He's helping his teammate for the first time ever. Because पहले Hamilton Alonso का teammate था. मतलब मूवी का second half चल रहा है अभी इसकी लाइफ का. Bro, he was पहले so mean like he would literally hold people back or like and he's such a good driver defensively also. And जब वो अटैक करता है ना इतना माइंड गेम्स के साथ करता है बिकॉज उसका ही सो सीजनड लाइक इतना कर चुका है ना वो. उसका हर जगह ध्यान रहता है लाइक वो स्क्रीन पे टर्न्स लाइक वो देखता है दूसरों के मूव्स. अभी रिसेंटली हुआ था ही वाज ऑन द माइक ही वाज लाइक वो स्ट्रोल डिड अ नाइस मूव आई सॉ इट ऑन द स्क्रीन. अब वो इतनी तेज रेस कर रहा है उतने में भी उसको वो दिख रहा है साइड में 300 km each पे है. Crazy. यार आप ध्यान थोड़ी हटा सकते हो. एंड सो वो खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाता है चलते चलते लाइक वो ऐसा बंदा है जो कुछ कॉल करेगा ना तो टीम बोलेगी हाँ ओके. इतना सेकंड हाफ में भी वो गुड गाय बना हुआ है. हाँ he went into retirement and then he came back. अच्छा. he was retired for good 5 years. No, not 4-5 years, 2 years. McLaren से ही retired. उसने 1 साल का गैप लिया. Yes, and then he came back. एक साल नहीं थोड़ा तो था यार 3-4 तो था साल यार. Because he had this bicycle accident also बीच में. तो हो सकता है 2-3 साल हो सकता है maybe. चलो. Okay. Favorite controversy was? Favorite controversy 2021 का the fiasco that happened. Of course. That yellow flag. Favorite track? Singapore for me. Why? I like a night race. Firstly, Singapore is one of the few night races. And उसके turn and track, especially 2 and 3, amazing. Did you like Las Vegas? वो कैसा लगा? I found it to be better than expected, but I don't think it will be a feasible option in the long run. Like मेरे को इतना कुछ वो नहीं लगा उसका खराब ऐसे. Like खराब नहीं था. सब अच्छा था, but like कुछ It's a flat track हुआ भी नहीं लाइक कुछ ऐसे कोई ओवरटेक नहीं थे कि भाई जो जाएं टर्न्स है नहीं बिकॉज़ वो स्ट्रिप पे पूरा इट्स अ पैरेलल रन तो टर्न्स नहीं उसमें थे बट इट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड बट नॉट ग्रेट इन माय ओपिनियन. बेस्ट अमेरिकन ट्रैक कौन सा है फॉर यू बिकॉज़ देयर हैव बीन लाइक 3-4 एंड व्हाई तो आई डोंट नो यार बट Miami is nice here.
उसका सेटअप वगैरह गुड. हाँ स्कूल बट ऑस्टिन यार लाइक क्या लाइक ओवरटेकिंग की भी कितनी उसमें लाइक इट्स एवेन्यूज है. हाँ एंड उधर ही आई थिंक फरारी जीती थी लास्ट अभी रिसेंट के पहले शायद 2018 What's yours? राइकनन जीता था. Chirag, what about you? What is your like favorite track कहाँ पे? ओवरऑल Yeah. फेवरेट ट्रैक आई लाइक द हंगेरियन जीपी वाला ट्रैक. Specifically कोई reason है या फिर in general बस? नहीं लाइक आई फील लाइक ट्रैक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव वो कि लाइक तुम्हारी कुछ वो मेमोरी हो या तुमको ऐसे ही अच्छा लगता हो. मेरे को ऐसे ही बस लाइक आई लाइक द ट्रैक लाइक ओवरटेकिंग भी है. इट्स अ गुड ट्रैक. अज़रबैजान वाला भी अच्छा था. अच्छा ट्रैक है. बाकू वाला. बाकू इज एक्चुअली नाइस. आई लाइक बाकू. बाकू इज आई वुड Are Saudis investing in this business? Yes, Saudi has a ये track. I think बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी दिख रहा है एकदम से like you know the Abu plan- Dhabi pays a ton of money हाँ. to have their race as the last Last race. race. हाँ नहीं but yeah I think these people are जो उनका एक idea ना कि by the time like 2030 we want to like we just don't want to be dependent on the oil. We want कि एक दूसरी चीजें हो like we have seen the same thing with football. उनका फास्टेस्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन था अभी जब ये हुआ था. जेडा था या कहाँ का था वो ट्रैक. भाई इतना तेज उन्होंने वो बनाया है ना वो ट्रैक एंड इट्स सिंपल लाइक इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बट इट्स सच अ गुड ट्रैक. एंड उसमें मेरे को याद है आई थिंक वर्स्टैपेन का वो लैप था क्वालिफाइंग में व्हिच वाज सो फास्ट लाइक वो लिटरल ऐसा ट्रैक था जिसमें भाई गले तक वो था भाई दिल की भाई क्या होने वाला है. ये बॉल है इधर इसका टायर है लिटरली हेयर का डिफरेंस. इतना क्रेजी उसका लैप जा रहा था क्वालिफाइंग में एंड देन लास्ट बिल्कुल इधर फिनिश लाइन है इधर लास्ट टर्न है इधर वो ठुक गया और ट्रैक अब वो लाइक लैप अबैंडन करना पड़ा उसको. पर भाई वो इतना फास्ट होता ना वो लैप लाइक ही वुड हैव शैटर्ड द रिकॉर्ड क्योंकि ऑब्वियसली नया लैप वो नया ट्रैक था बट ही वुड हैव सेट अ रिकॉर्ड दैट नो वन वुड हैव मैच्ड कुछ टाइम तक. लाइक बहुत फास्ट था उसका वो. बाप रे क्रेजी था यार. Wow. Okay, so Rishabh, not you. Yeah. Thank you for coming. Thank you for having such me. short notice. Thank you for having me. I've been excited about this podcast for a long time. Yeah, for those who don't know, we were actually supposed to have a football podcast today, but then due to a end minute cancellation, we had to call Rishabh and thank you for coming and saving the podcast. You're welcome. And in return what we have is that Singapore का ticket है हमारे पास. That is sponsored by लाख मेरे 100 के फॉलोअर्स हो जाएंगे तो अपन पहुंच जाएंगे भाई. ठीक है बस मैं आपको is that सिंगापुर ट्रैक पे जाके हाँ अरे उधर करेंगे पॉडकास्ट. so 100k guys please if you want to see Chirag spending 1 lakh whole package please subscribe. सिंधी हूँ यार ऐसे मत कर. Okay, so guys, thank you for watching. Keep liking, subscribing, and sharing our content. Thank you so much. We'll see you next week. Thank you. Bye bye.